Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of accounting. This is your first year intermediate accounting. So today we have the topic is petty cash book, and hope so. Inshallah, uh, from in Monday, from the start of the new week, I will start your new chapter, and we have gone through enough from the cash book and the petty cash book. So today will be our last class for the petty cash book, and hope so that you people will be confident enough for solving the questions. And if you are feeling any uncomfortable or any queries regarding the question solution, then you can ask me. So let's start your class. Open your manuals, your registers of accounting, and your books of accounts, so that we can start our question and go through the solution of petty cash book. Okay, let's proceed towards the question. This is your question of petty cash book. Yes. So here we have a question for the exam question. This is your 2002 regular question of petty cash book, which you have to go on through. A firm completed the following cash transactions during the December, during the month, or during the year. You can say it can be during the month of December for the current year. So it is just a month. Okay. So we are preparing a petty cash book only for the month. Okay. Sorry. Yes, because students were asking me, okay, whether we are preparing cash book for monthly or yearly. As you people have gone through many times, I asked you to write it down 3 lines at the start of your topic. That first of all, you have to write it down the name of the farm, and then you have to write it down the petty cash book, and then for the month off. So it is your monthly calculations for the cash book and your petty cash book that you are preparing, your monthly expenses and recording all your monthly transactions. And these two books are related and comprises of only cash transactions. So like your cash transactions is basically dependent upon only the cash book. No credit transactions need to be recorded in it. Okay. And if we have credit transaction, we usually ignore it. This is your exam question number 7. I proceed towards the question. On December 31st, withdrew 1500 check and cash it and give it to the petty cashier. So definitely your balance brought down will be 1500, and then you have to proceed your question. What we have to do, we have to go through the cash receipts. Then you have to go through the particulars and vouchers and the total amount and the all your expenses column. So this is, wait for a while. Yes, this is the question which we have to go through. The format we have already done. I will like to share the format again with you, so that you people can be capable enough to go through the format. Yes, this is your format for the petty cash book, that you have to maintain your receipt column, and then date, and then particulars, and then voucher number. It is not given, so you should not prepare your voucher number. You can do the total and then all expenses. Okay, I'm here on the question again. This is your December 3 purchase computer paper of amount 288. Hope so all the students are recording their transactions, and then meanwhile I will ask you the answers also. So please start your questions in your manuals. Start solving the questions right now in the class, so that we can discuss the answers of balance CD and balance BD. So this is December 2. We have purchased computer paper for the amount of rupees 288. So you people have to go through this also. This amount is 288. And then first of all, you will write this amount 288 in your total column also, and in the expense column, where you will need to record expenses की जो categories है. देखिएगा क्वेश्चन में इन्होंने आपको 5 categories of account दिए हैं जो आपको expenses की बनाने हैं.
ऑफिस सप्लाईज है, डिलीवरी एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है, विड्रॉवल्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो वट एवर यू वांट टू राइट, आप लोग अपने पास अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो नहीं आता, आप मिसलेनियस में लिख सकते हैं। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको किस कॉलम में रिकॉर्ड करूं, तो आप उसको मिसलेनियस के कॉलम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। Then we have December 6. For December 6, we have paid for the delivery 56 rupees, and then rupees 30 for the wages. And then number 9, we have 75 for the parcel postage charges. And then number 10, you have rupees 200 to the son of the proprietor from petty cash for personal use. This you can make in the column of withdrawals, ठीक है, क्योंकि उसने अपने सन की पेमेंट करी है रुपीज 200 टू फॉर द प्रोपाइटर फ्रॉम पेटी कैश फॉर द पर्सनल यूज। पेटी कैश के पैसों में से उसने 200 रुपीज लिए हैं अपने सन के लिए, so you can write this in your withdrawal column. Then you can do paid rupees 95 for the delivery charges. Yes. Then paid service station for servicing the personal car of the proprietor. Again, this can be gone into the withdrawal, okay, because it is use a personal car, personal expenses is going on. So whenever we use the word personal, we usually record in the withdrawals column. And then we have the delivery expenses is rupees 155. You can write in the delivery expense column. Then you have repair for the computer. You can write it down in the miscellaneous column, or if you want to prepare, you can make one repair column also, repairing expense column. जो इसमें mention है उसके अलावा भी आप अपना column बना सकते हैं, ठीक है. And then we have the last one, that is your paid for the entertainment, and this is your amount of rupees 55. So here all the transactions are completed. We have already gone through these transactions. We have 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this one is the first one, your balance brought down a total. You have 9 transactions that you need to record, and after recording 9 transactions, you need to apply the rule of horizontal and vertical totaling. Clear? So I'm waiting for your replies, for your answers. Once you have solved the question, then you have to notify me. uh, as I want to revise you or give you the deep explanation, मैं एक दफ़ा आप लोग को और explain कर देती हूँ. The transaction number 1 is very much easy. They have just give you the concept कि आपने withdraw कराए हैं 1500 रुपीस का चेक, फिर दोबारा उसको आपने कैश फॉर्म में अपने पेटी कैशियर को दिया है एक्सपेंसेस करने के लिए. So withdraw रुपीस 1500 चेक is just to confuse you. क्या आप समझें कि आपको चेक मिला है और आप बैंक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? नहीं, उसके आगे लिखा हुआ है कैश्ड इट, यानी हमने उसको कन्वर्ट टू कैश भी करा लिया और फिर अपने पेटी कैशियर को दिया है, ठीक है. देन ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज कंप्यूटर पेपर. ये तो बहुत इजी है, आपने कंप्यूटर पेपर परचेज किया 288. ट्रांजेक्शन नंबर 6 में एक ट्रिकी पॉइंट क्या था कि ₹30 वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज. इसका मतलब ये है कि आपने कोई मर्चेंडाइज खरीदी कहीं से और आपके साथ कोई लेबर आया जिसने आपका लगेज कैरी किया, आपने उसकी वेजेस दी हैं 30 रुपीज की, ठीक है. तो जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसने हमारा लगेज हम कैरी किया और हमारी कार तक, हमारी गाड़ी तक लेके आया, हमने उसको 30 रुपीज वेजेस दे दिए. इसका सेंस यहाँ पे आता है. फिर मैं आप लोगों के पास डिस्कस करती हूँ. हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 10 और ट्रांजेक्शन नंबर 22. इसमें यहाँ पे दोनों में पर्सनल का वर्ड यूज हुआ है. जैसे ₹200 टू द सन ऑफ द प्रोपाइटर फ्रॉम पेटी कैश फॉर पर्सनल यूज. हमने 200 रुपीज दिए सन ऑफ द प्रोपाइटर को, ठीक है, प्रोपाइटर के सन को हमने 200 रुपीज दिए उसके पर्सनल यूज के लिए. अगेन ये फर्म से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, तो आप इसको विड्रॉवल के एक्सपेंस में लिखेंगे. फिर हमने बात करते हैं नंबर 22 की.
पे सर्विस स्टेशन फॉर सर्विसिंग द पर्सनल कार। अब प्रोपाइटर अपनी कार की सर्विस करा रहा है फर्म के पेटी कैश एक्सपेंस में से, तो ये भी हम अपने विड्रॉवल्स में लिखेंगे ताकि आप अपने प्रोपाइटर को बता सकें कि ये जो दो खर्चे हुए हैं 75 रुपीज़ के और 200 रुपीज़ के, ये आपने अपने लिए खर्च किए हैं, उसको अकाउंटेंट ने बिजनेस के काम के लिए यूज नहीं किया, ठीक है। क्योंकि प्रोपाइटर जो है जो 1500 रुपीज पेटी कैशियर को देके जा रहा है, वो पेटी एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस करने हैं। पेटी एक्सपेंसेस प्रोपाइटर खुद नहीं कर सकता उन पैसों में से, सो दैट्स व्हाई अकाउंटेंट उनको रिकॉर्ड करेगा विड्रॉवल्स के कॉलम में। अगेन हमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे नजर आए, जैसे कि हमने कहा रिपेयर ऑफ कंप्यूटर्स, मैं बात कर रही हूँ December 30 की, या इंटरटेनमेंट। अब मेरे पास यहाँ पे इंटरटेनमेंट का कॉलम नहीं बना हुआ या रिपेयर ऑफ कंप्यूटर का कॉलम नहीं बना हुआ, December 30 और 31st, इन दोनों को यानी रिपेयर ऑफ कंप्यूटर को और इंटरटेनमेंट को आप कौन से कॉलम में मेंशन कर सकते हैं? मिसलेनियस में, ठीक है। सो हम मिसलेनियस में अपने उन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपके पास जिसके कॉलम अवेलेबल नहीं होते। That's it. This is the main concept of your petty cash book. I'm waiting for your answers that you people will discuss with me. Okay. So this is the question which we have gone through, or after writing all the expenses, we have the total amount of expenses, the solution of this petty cash book, the vertical and horizontal. After doing the horizontal एंड वर्टिकल कैलकुलेशन, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस 1474, एंड द अमाउंट विल बी, जब 1474 को आप माइनस करेंगे 1500 में से, ठीक है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1500 माइनस 1474 to get the amount of balance CD, and that is your 26, ठीक है। 1474 is the amount of total expenses. The balance CD is your 26. Now you have to close your petty cash book with the amount of 1500 in the cash receipt side also and in the total column also. फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कैश रिसिप्ट्स को जब जब डबल लाइन से आप क्लोज करेंगे 1500 से, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 26 रुपीज, एंड देन उसके नीचे आप दोबारा अपना कैश एक्सपेंस शो करेंगे। सो दिस इज द आंसर विच वी हैव गॉन थ्रू। नाउ यू पीपल हैव टू प्रिपेयर द journal entry also. These journal entry, number one is establishment, then expenses, and then replenish. Yes, I'm waiting for the journal entries answer. The first entry is your petty cash. Wait for oil. Petty cash. Wait. Petty cash book or petty cash fund, you can write. Yes, and then we have, yes. Oh my God, I'm making mistakes in writing. Yes, I'm waiting for the answers. So for the first journal entry, I would like to write the answer. The first amount will be your 1500, and then second again your 1500. Okay, this is what I'm preparing for the first. Here you can write the book or fund as you want, ठीक है, petty cash book या petty cash fund जो आपको available था. If you are comfortable in writing the fund, you can write fund here, ठीक है. So you can right, this is your petty cash fund 1500 debit, and then you can write your again 1500 will be a cash credit. Then next entry we usually require for recording all the expenses. All your expenses will be debited. मैं यहाँ पे expenses को individual नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे all expenses लिख रही हूँ और डायरेक्ट उसका सम लिख रही हूँ. आप इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को काइंडली शो कीजिएगा अपनी जर्नल एंट्री में. ये all your expenses will be debit. What was the answer of our expenses? 1474. Yes, 1474 is your expense answer. Then what will be credited? Your petty cash fund will be credited with the amount of 1474. Then we have the last journal entry is again petty cash fund, and then the amount of petty cash fund will be the amount of your expenses which we have gone through, which we have done. Okay, that is also 1474.
and then credit will be your बैंक or cash. ठीक है, you can write it down, 141474. Okay, so this is the amount which you have to go through. Okay, this is your complete solution of your petty cash book. Okay, now I would like to share the few questions that I will recommend you people to go through. This is the question for your assignment also, and for your class practicing, that you people have to go through this. You have to solve exam question number 8. This is your past paper question of 2006. The name of the person is Zishan Traders, and you have to prepare the petty cash book from this question, and share your answers on. You can email me the corrected answers, but and write it your name in your subject column, so that I come to know that you people, how many of you have shared your answers. Okay, so this is just a simple petty cash book that you have to prepare. Today I am closing the chapter of cash book and petty cash book, inshallah. Tomorrow will be your you can say test of mcqs. As I told you that I will share a few mcqs with you. ठीक है, तो कल हम एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे आप लोगों के साथ. अच्छा, एमसीक्यूज बेस्ड करेंगे आप लोगों के सारे चैप्टर्स पे. It will be based on all the chapters. So kindly revise your main basics जो आपको पता है. अपने lectures को revise कीजिएगा. और जो जितने भी part आप लोग lectures में go through करते हैं, जो class में मैं आप लोग को बताती हूँ, so class lectures अच्छे से go through करें. It consists of all the topic which we have done. Then एक question और है. This is the petty cash book and one question of cash book. These two questions you have to go through. Yes, this question of cash book. This is exam question number 9. This is the very old past paper question, but I found it very good for you people to practice it. Here we have the tactical part is cash over written over here. ठीक है, कैश ओवर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ऑफ ₹30. सो इसको कैश ओवर एंड कैश शॉर्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, उस पॉइंट को फोकस कीजिएगा. सो कैश ओवर एंड कैश शॉर्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैश बुक में, यानी आप लोगों ने जो 3 कॉलम कैश बुक की है, सो उसमें जब भी आपके पास कैश ओवर होता है, वो आपके पास रिसिप्ट साइड के कैश में रिकॉर्ड होता है. ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा. हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमने यहाँ पे फोकस करना है. आई विल राइट इट डाउन. दैश यस वेट. ठीक है, हमारे पास लास्ट एंट्री है अप्रैल 30 की, एंड एन अप्रैल 30 वी हैव कैश फाउंड ओवर. ठीक है, और कैश फाउंड ओवर हमेशा आपके रिसिप्ट साइड के कैश कॉलम में रिकॉर्ड होता है. ठीक है, एंड दिस इज योर ओवर कैश, बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ऑन द रिसिप्ट साइड. और जब भी आप लोग के पास अगर क्वेश्चन में कैश शॉर्ट आए, सपोज अगर इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो, then you can write it down in the payment side cash. Okay, so this is again the another point that you have to you can say go through. These are your 2 questions. Kindly take the screenshot of these 2 questions. Number 1 is your exam question number 9. This is available in your book of Petiwala, and then you have to go through the exam question number 8. This is related to petty cash book, and you have to submit the answers to me on my email, and I'm writing my email over here. It's mrs underscore, it's underscore. Okay, जो आप लोग शिफ्ट करके देन डैश प्रेस कीजिएगा, देन MASSHOOD the few students were sending me the email and they feel it is not yet sent. Mistake आप लोग क्या करते हैं, मशहूद में डबल एच है और ये अंडरस्कोर है. ठीक है, जो शिफ्ट के बाद आप प्रेस करते हैं, you have to press the shift and then press dash, so you will get this underscore, and in Mashood you have a double H.
This is the complete address of my email. So you have to share your answers with me of these two questions. This is all for today. Thank you so much for attending the class. Thank you. And inshallah, then prepare for your test and be prepared yourself for the next chapter. Thank you so much.